Hi and welcome to Asian Photography's YouTube channel. My name is Bhavya Desai and today is all about the Tamron 70-300mm lens for the Sony's E-Mount. तो Tamron जो है ये consistently अपना Sony का E-Mount lens का portfolio है उसे expand कर रहा है. They have already launched the 28-200mm, 70-180mm and now we also have the 70-300mm in this portfolio. तो हमने वो दोनों लेंस जो है वो रिव्यू किए हैं और अगर आपको वो लेंस के रिव्यूज चेक करने हैं तो आप उसे देख के वापस आ सकते हैं बिकॉज ये वीडियो में वी विल बी रेफरिंग टू बोथ ऑफ दीज लेंसेज एज वेल. तो अभी बिकॉज इतने सारे लेंसेज आ गए हैं सो देर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग अक्रॉस द फोकल रेंज एंड इसके वजह से कभी कभी आपको दिक्कत हो सकती है कि कौन सा बेस्ट लेंस है आपके लिए अगर आप टैमरॉन का लेंस खरीदना चाहते हैं. So, इस वीडियो में we will try and answer that question and also in order to review this lens we have actually paired it with the Sony's A7S III to find out how this does. So like most of the lenses that come from Tamron for the E-Mount, this effectively goes against the Sony's 70-300mm lens. But it will cost you nearly half the price of what the Sony will. इसका प्राइस है ₹47,900 एंड इसके कंपैरिजन में जो सोनी का लेंस आपको आएगा उसका प्राइस रहेगा इफेक्टिवली अबव अप्रोक्सीमेटली ₹1 लाख. बट सोनी के जो लेंसेज है लाइक द अदर इन द पोर्टफोलियो विल हैव इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन. सो इफेक्टिवली ये जो टैमरॉन का लेंस है ये बेसिकली एक अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट और लाइट वेट वेरिएंट है अगर आप इसे चूज करना चाहे तो. इन टर्म्स ऑफ लुक, बॉडी एंड फील द लेंस इज वेरी कॉम्पैक्ट एंड सुपर लाइट. It only weighs 545 grams and when retracted, it's only about 5.8 inches. तो ये लेंस में कोई बटन्स भी नहीं है सिवाय एक फोकस रिंग और अपने जूम रिंग के अलावा. बट द लेंस इज ऑल्सो वेदर सील्ड एंड ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी जो है I would think it's really good. Now this lens is actually a 4.5 6.3 lens which means it's not really a very fast lens. बट इसे बनाया भी नहीं गया है ऐसी लेंस के लिए. इसका टारगेट ऑडियंस वो यूजर है जो बेसिकली एवरीडे इमेजेस शूट करना चाहता है एंड ऑल्सो वांट्स टू गेट क्लोजर टू देयर सब्जेक्ट्स. सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वैसे यूजर हैं जिसे अपने किड्स को शूट करना है, वेकेशन शूट करना है या उनके आउटडोर स्पोर्ट्स या कुछ शूट करना है, इवेंट शूट करना है, सो दिस लेंस इज टारगेटेड टुवर्ड्स यू. And the faster you understand that, the easier it is to understand this lens. In terms of image quality, the lens delivers sharp and crisp images. And जो अलग focal length पे भी हमने इसे shoot किया है, तो ये images काफी sharp हैं. और ये जो sharpness है, ये maintain करके रखता है center पे भी and even on the sides. Now that is always resemblance of a good performance by a good lens. But ये lens जो है, ये 4.5 6.3 है, so इसका मतलब ये है कि ये आपको ज़्यादा separation नहीं देगा आपके subject से, especially from the background. अगर आप लोअर फोकल लेंथ या फोकल रेंज में अगर आप शूट कर रहे हैं लाइक फॉर एग्जांपल 150 mm से नीचे रहेगा तो ज्यादा सेपरेशन नहीं देगा. As you get closer to your subject, then definitely it will give you some good separation and the images will be quite good. In terms of focus tracking as well, it is quite sharp and does the performance and gives a good performance in this department. So overall, if you ask me, then in terms of image quality, I would say that the images are quite good and the performance of this lens, especially in the outdoor conditions, is क्वाइट नाइस. अगर हम ये लेंस के लो लाइट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है समझना वो ये है कि ये एपर्चर की जो लेंसेज होती हैं दे आर नॉट बेस्ट सूटेड फॉर लो लाइट कंडीशंस. तो अगर आपको वैसा डिजायर्ड जो एकदम बहुत अच्छा आउटपुट दे और इंडोर एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे इमेजेस डिलीवर करे तो देन यू शुड ऑलवेज लुक एट एनी लेंस व्हिच इज बेसिकली f2.8 एंड बिलो बिकॉज दे आर बिल्ट विद दोज ऑप्टिक्स जो आपको वैसा परफॉर्मेंस देगी. एंड अगर आप वैसे यूजर हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप टैमरॉन का 28-200 लेंस चेक करें बिकॉज वो f2.8 वाला लेंस है. वो ऑफकोर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इट विल बी अराउंड 64,500 अगर आपको लेंस खरीदना है बट इट विल डेफिनेटली गिव यू द डिजायर्ड आउटपुट. बट कंसिडरिंग ऑल ऑफ दोज फैक्टर्स आई वुड से कि लो लाइट कंडीशंस में ये लेंस का परफॉर्मेंस काफी डिसेंट है. आई वुड से इट्स एक्सेप्शनल बट डेफिनेटली इट विल डू द जॉब दैट यू नीड. In order to check the chromatic aberration, we always test the lens and put it through the quick MTF benchmarking test. और इसका जो आउटपुट और रिजल्ट था उसका CA वैल्यू 0.57 पिक्सल्स आया है. वो काफी नॉर्मल और डिसेंट रेंज है, इसमें कुछ अलार्मिंग नहीं है. In terms of lens flaring and lens ghosting performance, it was quite impressive. There was hardly any lens flare and ghosting as you can see from the images. And distortion के बारे में अगर हम बात करें तो slight perspective distortion lens में था,
but that's quite common. और ये ऐसी कोई लेंस नहीं आती जिसमें डिस्टॉर्शन आपको नहीं दिखाई देगा unless it's a tilt shift lens. So in these departments I thought the lens was pretty good. So what are our final thoughts on the Tamron 70-300mm lens for the Sony E-Mount? क्या ये लेंस आपके लिए बेटर है या तो Tamron का 28-200mm f2 point लेंस आपके लिए बेटर है? तो अगर ये लेंस के बारे में हम बात करें और इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, so for a price tag of rupees 47,500, this lens is actually pretty good and does a decent job. Especially outdoor conditions में इसके images काफी sharp और crisp आते हैं. Low light performance के बारे में भी अगर हम बात करें, so ये decent job करता है. Autofocus tracking भी जो है इसका काफी अच्छा है. तो ये डिसीजन कि आपको ये लेंस खरीदना चाहिए या 28-200mm खरीदना चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन वेयर यू आर इन टर्म्स ऑफ योर फोटोग्राफी जर्नी और आपको उससे क्या चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लुकिंग टू गेट ग्रेट आउटडोर शॉट्स, वेरी गुड लो लाइट परफॉर्मेंस एंड इंडोर परफॉर्मेंस, देन आपको डेफिनेटली 28-200mm f2.8 लेंस खरीदना चाहिए बिकॉज वो आपको परफेक्ट डिजायर्ड आउटपुट देगा. उसका प्राइस इससे थोड़ा ज्यादा होगा, विच इज approximately around 64,500, but it will definitely not disappoint you and give you what you want. And if you have a much bigger budget as well and you think that you can spend much more money, then I would recommend the 70-180mm lens as well, because that is also f2.8 but which has much better optics. So ये पूरा focal range जो है जिसमें काफी आपको अलग price range में different lenses मिलेंगे, and that lens which you want to buy depends upon what you are looking in terms of your photography. So if you like this video, then make sure that you like, share and subscribe to our channel. As usual, do follow us on Instagram as well. But yes, please do subscribe, put the bell notification on as well. And until next time, happy viewing.